Welcome to Education Point. Once again, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଏକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ୍ ଉପରେ ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଟପ୍ MCQ on Engineering Mechanics for OSSC ATO Exam. So ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟ୍ରେନିଂ ଅଫିସର ଯୋଉଟାକି ATO କୁହାଯାଏ, DTETରେ ଆମର ଡିରେକ୍ଟର ଅଫ୍ ଟେକ୍ନିକାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରେନିଂ ଓଡ଼ିଶା এই ডিপার্টমেন্টরে ଆପଣ ଚାକିରି ପାଇବେ ଆଉ ସମସ୍ତ ITI ମାନଙ୍କରେ ଚାକିରି ପାଇବେ। ଯେମିତିକି ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ITI ଡିପ୍ଲୋମା ରହିବ। ସିମିଲାରଲି ବିଟେକ୍ ପିଲା ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଇଏ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରୁପ B ପୋଷ୍ଟ। ଟୋଟାଲ ଭ୍ୟାକାନ୍ସି 250 ଆସିଯାଇଛି। ସୋ ଜେନେରାଲି ଏଇଠି କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ମେଥଡ ଅଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ। ମେଥଡ ଅଫ୍ ସିଲେକ୍ସନରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ written exam and practical test. So देखंतु जो माने डिप्लोमा और डिग्री होल्डर से माने ओनली रिटन एग्जामिनेशन देबे। जो माने ITI NSC NTC होल्डर से माने प्रैक्टिकल टेस्ट देबे। किंतु दुई जणांकर एग्जाम 150 मार्क्स रा आसीबो। सेथरे आपनकर मेरिट लिस्ट आसीबो। सो एठी मु देखै दउची आपनको बोथ डिप्लोमा डिग्री एवं ITI मानकर एग्जाम सिलेबस कौन रहिबो, को पैटर्न रु केते मार्क आसीबो एबे डिस्कशन करिवा। देखंतु एठी दुईटी टेस्ट रे एग्जाम आपण सिलेक्शन पाइबे। गुटे हला प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस जोटा कि 10th स्टैंडर्ड रो क्वेश्चन रहिबो। एई 10th स्टैंडर्ड भितरु आपनकर जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल इंग्लिश, सो जनरल अवेयरनेस ए सब क्वेश्चन कवर हबो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस। सो मु जो बहुत जल्दी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन पाई क्वेश्चन अपलोड करिवि, प्रैक्टिस सेट जोटा कि बहुत हेल्पफुल हबो। एंड फाइनली जो माने प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस क्लियर करिवे से माने मेन एग्जामिनेशंस को अटेम्प्ट करिवे, जोटा कि निजर कंसर्न ट्रेड थ्योरी रहिबो। जो माने ITI रे जो ट्रेड रे पास आउट हेतिबे सेही ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चन आसीबो। सिमिलरली डिप्लोमा डिग्री पिला माने जो ब्रांच रे से माने क्वालिफिकेशन थिबो सेही ब्रांच रिलेटेड क्वेश्चन आसीबो। सो बेसिकली एठी आमे जदि देखिबा तीनटा सेक्शन आपनकर ITI डिप्लोमा एगेन ITI रो दुईटी सेक्शन जणाले नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड आउडला इंजीनियरिंग ट्रेड। सो डिप्लोमा डिग्री होल्डर पाई कॉमन क्वेश्चन आसीबो, जेमति कि फर्स्ट ईयर डिप्लोमा रो सिलेबस रहइबो 90 मार्क रो क्वेश्चन रहइबो। मन रखंतु 90 मार्क्स रो क्वेश्चन आसीबो डिप्लोमा फर्स्ट ईयर कॉमन सिलेबस रु। सो सेही थ्रू आपनकर आज जो मु टॉपिक नेछि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सेथ्रु मध्य आसीबो से 90 मार्क भितरु। सेकेंड रहिबो एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट एंड स्मार्ट टेक्नोलॉजी, जोटा कि 10 मार्क कैरी करिवो। ऑलरेडी मु एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट एंड स्मार्ट टेक्नोलॉजी रो वीडियो अपलोड करिछि। जो माने देखि नांती जाई कि देखि परिबे। वीडियो रो डिस्क्रिप्शन रे मध्य लिंक रखि देबी। जो माने देखि नांती से माने जाई कि देखि परिबे। डिप्लोमा लेवल इंजीनियरिंग ड्राइंग 20 मार्क्स। सो इंजीनियरिंग ड्राइंग रो मध्य 3टी रु 4टी मु वीडियो अपलोड करथिली। जो माने देखि नांती जाई कि देखि परिबे। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स देखंतु, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स रो 20 मार्क्स याकु मध्य हमें आनिबा। जनरल इंग्लिश 10 मार्क्स रो पड़िबो। जनरल इंग्लिश में कम्युनिकेटिव इंग्लिश पड़िबो 10 मार्क्स रो। सो टोटल 150 मार्क्स रो फॉर डिप्लोमा डिग्री होल्डर मानको पई आसीबो। ये होची आपनकर मेन एग्जाम पई मु कहूची। प्रिलिमिनरी 10th स्टैंडर्ड रो बोथ ITI डिप्लोमा मानको पई कॉमन क्वेश्चन आसीबो। ये देखंतु NTC और NSC होल्डर मानको पई जो माने ITI पास आउट से मानकर थ्योरी 60 मार्क्स, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस 15 मार्क्स, इंजीनियरिंग ड्राइंग 15 मार्क्स, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल 10 मार्क्स, इंग्लिश 10 मार्क्स, प्रैक्टिकल ऑफ CITS होल्डर जो माने ITI करिकि CITS पास करिसंती सेमाननको तो नो डाउट 20 मार्क्स रो एक्स्ट्रा मिलिबो। ता सहित ITI होल्डर मानक मई 40 मार्क्स रो मन रखंतु 40 मार्क रो प्रैक्टिकल एग्जाम देवा पड़िबो। सपोज आपनकर ट्रेड फिटर रिलेटेड CITS स्कीम रे जो टाइप रो प्रैक्टिकल आसे सेही पैटर्न रे आपनकर प्रैक्टिकल एग्जाम हबो। सो तार
mark hela 40 marks. So total 150 marks for NTC and NAC holder. ये थिला आपनकर इंजीनियरिंग ट्रेड. नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड जोटा कि कोपा और ड्रेस मेकिंग आसीबो ता पई देखंतु थ्योरी 60 मार्क्स, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल 40 मार्क्स, इंग्लिश 10 मार्क्स, सिमिलरली प्रैक्टिकल सेमानक पई मध्य 40 मार्क्स. सो टोटल 150 मार्क्स रो मध्य नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड देबे. तो ये थिला डिटेल सिनेरियो केमते आपण प्रिपरेशन करिवे आपण को माइंड रे रखंतु जे टोटल को पैटर्न रो केते मार्क रो आसुची ए अनुसार प्रिपरेशन स्टार्ट कर दियंतु. सो आज आसतु मु इंजीनियरिंग जोटा कि डिप्लोमा डिग्री होल्डर मान फर्स्ट ईयर कॉमन सिलेबस जोटा कि 90 मार्क रो सेई भितरु इंजीनियरिंग मेकानिक्स रो क्वेश्चन आसीबो ता ऊपर मु क्वेश्चन किसी डिस्कशन करिबा. चलंतु प्रथम क्वेश्चन, व्हाट इज इंजीनियरिंग मेकानिक्स? So options are study of bodies under motion without considering forces, applications of mechanics to issue involving common engineering aspects, study of bodies only under rest, study of bodies under motions. So engineering mechanics ro definition ba definition कहले कौन बुझिबा? It is the branch of science which is application of mechanics to issue involving common engineering aspects. So option B will be correct. Next question, what is mechanics? So only mechanics कहले कौन बुझिबे? Options देखो, branch of science which deals with failure analysis, branch of science deals with conditions of rest or motion of bodies, branch of science which deals with study of bodies under rest. Fourth option, branch of science which deals with study of bodies under motion. So आपण देखंतु ए चारोटी ऑप्शन भितरु ऑप्शन बी जोटा कि ब्रांच इट इज मेकानिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the condition of rest or motion of bodies. So option B will be correct. Next question, which of the following is a branch of mechanics? एमान को मध्यरु मेकानिक्स रो कोडा ब्रांच ऑप्शंस देखंतु स्टैटिक्स एंड काइनेटिक्स, स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स, काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स, काइनेटिक्स एंड काइनेमेटिक्स. So the चारोटी एक ऑप्शन देखिबे ऑप्शन बी which is statics and dynamics are the branch of mechanics. So option B will be correct. Next question, which of the following is the basic law of law for mechanics? So एमान को मध्यरु बेसिक लॉ कोडा मेकानिक्स रो मेकानिक्स पई बेसिक लॉ कोडा ऑप्शंस देखंतु न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, parallelogram law, Newton's law of motion, Hooke's law. So basic law है Newton's law of motion. Option C will be correct. Next question, which of the following is termed as an action of pull or push of a body at rest or motion? So options are torque, momentum, work, force. So out of four options, option D, which is force, is the termed as an action of pull or push force body at rest or motion. So force है जोटा कहउचंती ओडिया रे बड़ बॉडी रेस्ट अवस्था थाओ कि मोशन अवस्था थाओ ताकू जदि आमे कौन एक्सटर्नल फोर्स दे कि पुल करि परिबा पुश करि परिबा देन इट विल कौन बॉडी रेस्ट और मोशन अवस्था को चेंज हबो ताकू कहबा फोर्स. सो फोर्स टर्म टा आमे कहि परिबा इट इज द टर्म एज एन एक्शन ऑफ पुल और पुश ऑफ ए बॉडी एट रेस्ट और मोशन. ऑप्शन डी विल बी करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, what is kinematics? So the options are branch of dynamics which deals with study of bodies under motion without considering forces. Second option, branch of dynamics which deals with the study of bodies at rest. Branch of dynamics which deals with the study of bodies under motion by considering forces. Branch of dynamics which deals with study of bodies under the motion. So kinematics कहले it is the branch of dynamics which deals with the study of bodies under motion without considering forces. So मन रखंतु without जो term टा थिबो without considering forces, then it is known as kinematics. So option A will be correct. Next question, which of the following is the condition for the three force theorem in mechanics?
Options are the force system should be in equilibrium only. The force system should be non-coplanar. The system should be coplanar parallel. The force system should be in equilibrium, coplanar, concurrent, or parallel. So out of four option, option D, which is the force system should be in equilibrium, coplanar, concurrent, or parallel. So these are the conditions for the three force theorem. So the three force theorem ro condition है force टा equilibrium थिबो, coplanar थिबो, concurrent थिबो बा parallel थिबो. So option D will be correct. So मन रखंतु option D will be correct. Next question. Which of the following is the SI unit of force? So force ro unit कौन आमे जे force is equal to F is equal to mass into acceleration. Mass into accelerations. So आपण mass रो unit जानिछंती kg आ acceleration हला मीटर पर सेकंड स्क्वायर. So आपण कहि परिबे kg into मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ऑप्शन अछि कि देखंतु kg into मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑप्शन डी रे अछि. ऑप्शन डी विल बी करेक्ट. So आपण माने SI force रो SI unit kg into मीटर पर सेकंड स्क्वायर कहि परिबे. Next question. According to which of the following laws of mechanics, a body remains continue in its state of rest or motion until it is disturbed by an external agent? So क्यों नियम अनुसारे लॉ अनुसारे जे बॉडी जदि कन्स्टांट अवस्था रे रेस्ट अवस्था रे अछि बा मोशन अवस्था रे अछि ताहले सॉरी बॉडी जदि बॉडी रहिबो रेस्ट बा मोशन अवस्था रे जदि आमे कोनोसी बाह्य बल बा एक्सटर्नल एजेंट जदि न दउचे ताहले से बॉडी जदि मोशन अवस्था रे थिबो देन इट विल बी इन मोशन स्टेट. जदि ये रेस्ट अवस्था रे अछि ताले रेस्ट रहिबो. ताले को लॉ कहूची ऑप्शंस देखंतु. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, सुपरपोजिशंस लॉ. आपण जानिछंती न्यूटन फर्स्ट लॉ कहिला जे कोनसे एक बॉडी से रेस्ट अवस्था थाउ कि मोशन अवस्था थाउ ताले सेही कंडीशन से मेंटेन करिवो अनलेस अंटिल जो पर्यंत कोनोसी एक्सटर्नल एजेंट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई न हिची. ऑप्शन ए विल बी करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is the characteristics of force? एमानक मध्यरु characteristics of force कोन? So options हला magnitude of force, point of application of force, direction of application of force, all the options above mentioned. So out of four options, you can see force means some amount of force. So it has a magnitude. So it also have point of applications. So we can say all the above options are correct regarding force. Option D will be correct. Next question. When can two forces be in equilibrium? Dita force केतेबेले equilibrium हेबे. Options देखंतु. They are equal in magnitude. Second है they are co-linear. They are opposite in directions. All of them above mentioned. So जदि आपण दीटा फोर्स इक्विलिब्रियम केतेबेले हेबे जेतेबेले सेमानकर मैग्नीट्यूड समान थिबो, सेमाने को-लिनियर हेतिबे आ सेमाने opposite direction रे पड़थिबे ताले ऑप्शन डी विल बी करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following statement describes the resultant of two forces? Resultant of two forces very important. Options देखंतु. Force that maintains the system in equilibrium, force that has highest magnitude in the system, force that has same effect as the two forces, force that has same effect as one of force. Out of four option, option C, which is force that has same effect as the two forces, that will give the resultant of forces. Very important. Resultant forces jaha habo dita force ର same effect सेटा पड़िबो. Force that has same effect as the two forces. माने दीटा फोर्स रो जहा इफेक्ट आस्तुबो ता रिजल्टेंट मध्ये से आस्तुबो. That will be called as resultant of two forces. So option C will be correct. Next question. The point of applications where the total weight can be expected to be concentrated if the gravitational force is dispersed across the volume of the body is called. Options are the surface of the body, centroid of the body, center of gravity of the body, moment of inertia. So here the question asked the point of application where the total weight can be expected to be concentrated. ଯେତେବେଳେ
total weight टा गोटे जगह concentrated होची if the gravitational force is dispersed across the volume of the body. Gravitational force body रो सबुआडे disperse होची ताहले ताको कोन कहिबा ताको कहिबा center of gravity, very important, center of gravity of the body. Next question, the internal force in structure among the following is, options are gravity force, compression force, impact force, bending force. So the internal force is also known as compression force. Which of the following is a feature of frictions? Options are always act in the direction opposite to the applied force, not self-adjusting force, always act in the direction of applied force, it is an active force. So feature of frictions always act in the direction opposite to the applied force. Option A will be correct. Next question. When there is no relative motion between touching surface, which of the following force is developed? ଯେତେବେଳେ ଦିଟା surfing surface touch ନ ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୋଉ force develop ହଉଛି? Options ଦେଖନ୍ତୁ, dry friction, dynamic friction, fluid friction, static frictions. So the correct option for this question is static. That means there is no relative force between touching surface. Data surface ଭିତରେ କୌଣସି force applied on, that is static friction. So option D will be correct. Next question. When the surface of two bodies come in contact, there is a limited amount of resistance to sliding between them, which is known as, very important. When question देखंतु, when the surface of the two bodies come in contact, दीटा को surface body कोन contact रे आसीबे, there is a limited amount of resistance, माने ये नहे कि पूरा डायरेक्ट स्टिक करी रहिबे, रेजिस्टेंस रहइबो टू स्लाइडिंग, दीटा भितरे स्लाइडिंग पई मिनिमम गुड अमाउंट रो रेजिस्टेंस पड़िबो, ताल ता कोन कहिबा, lubrication, friction, internal forces ना attraction, that will call friction. So friction chapter मध्ये बहुत क्वेश्चन आसीबो. So 90 आपण माने मु कहितली जे डिप्लोमा और डिग्री पई डिप्लोमा रो फर्स्ट ईयर सिलेबस रु 90 मार्क्स रो क्वेश्चन आसीबो. से भितरु इंजीनियरिंग मेकानिक्स रु मध्ये क्वेश्चन आसीबो. आपण माने भलरे देखंतु, मु सिलेबस को फोकस करिकि सिलेबस रो इंजीनियरिंग मेकानिक्स रो जो जो टॉपिक अछि ताको फोकस करिकि क्वेश्चन तयारी करिछि. डेफिनेटली ए क्वेश्चन आपण मानकर एग्जाम पई बहुत हेल्पफुल हबो. सो वीडियो को स्किप करंतुनी, संपूर्ण देखंतु. डेफिनेटली आपनकर आईडिया आउ आपनकर जो इंटरेस्ट थिबो एग्जाम पई डेफिनेटली डबल्स हे जिवो. So next question देखिबा. Which of the following does not affect frictional force? एमान को मधुर कोडा frictional force को affect करेनी. Options देखंतु, surface roughness, reaction of force, area of contact, force tending cause motions. So देखंतु frictional force सहित area of contact रो कोनोसी affect नहीं. So option C will be correct. Next question. Which of the following is valid if two forces are represented by two sides of triangle in order? So एठी आमे जानिछे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ता सहित क्वेश्चन आछे ट्रायंगल, जदि दीटा फोर्स को आमे दीटा साइड ट्रायंगल दीटा साइड हिसाब रे नबा ऑर्डर रे, ताहले केउ प्रकार माने फोर्स रिप्रेजेंट करि पारिबो. ऑप्शन देखंतु, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस इज रिप्रेजेंटेड बाय द थर्ड साइड इन द सेम सीक्वेंस. सिदला जदि ये ट्रायंगल हैला, देखंतु ये ट्रायंगल दीटा फोर्स देइछि हैला. सपोज ये हैला F1 धरा जाऊ P, ये हैला Q, बुझला दीटा फोर्स, ताले ये सेम डायरेक्शन रे अछंती, सेम साइड रे अछि, ताले से क्वेश्चन अछि जे तार रिजल्टेंट ता एडा हैला R हबो. रिजल्टेंट ता से पचारछि सेम साइड रे हबो, थर्ड साइड ता हबो, दैट मींस ए साइड ता थर्ड साइड हबो, किंतु सेम सीक्वेंस. सीक्वेंस माने देखंतु एरो मार्क देखंतु से बला रहइबो कि. नेक्स्ट देजी, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस इज रिप्रेजेंटेड बाय थर्ड साइड इन रिवर्स ऑर्डर रहइबो कि. रिवर्स माने एरो मार्क रा जदि एमदी थिबो ए बला रहइबो कि. द रिजल्टेंट इज मैग्नीट्यूड इज 0, द रिजल्टेंट इज मैग्नीट्यूड ग्रेटेस्ट. सो देखंतु एठी नो डाउट आपनकर ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस रे दीटा फोर्स पडुजी, सपोज P एंड Q, ये यदि सेम ऑर्डर रे आसंती ताले तार रिजल्टेंट ता ऑब्वियसली थर्ड साइड दा हबो, किंतु तार ऑपोजिट डायरेक्शन हबो. सो दैट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ टू sides of a triangle. So option B will be correct.
the resultant of two forces is represented by the third side in reverse order. Very important. Mon rakhantu. Next question. What is the relationship between each force if three concurrent forces acting on a body according Lami's theorem? So Lami's theorem अनुसार कौन कहूची देखंतु से कहला तीन गोटे पॉइंट रे जदी तीनोटी फोर्स एक्टिंग करंती ताहाले लामिस थ्योरम कौन कहूची directly proportional to the sine of the angle between the other two forces, inversely proportional to the cosine of the angle between the other two forces, directly proportional to the cosine of the angle between the other two forces, inversely proportional to the sine of the angle between other sides. ସେଠି ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆମେ ଲାମିସ୍ ଥ୍योରମ୍ ଯଦି କହିବା ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ରେ ପଡୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଏଠି ଆମ ସପୋଜ ଦିଟା P Q R तीनटा फोर्स जदि पड़ुची आ सेमानक भितर एंगल दे देइथिबो ताले से कोन कहउची लामिस थ्योरम कहला इट इज द फोर्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू फोर्सेस सब P नबा ए दिटा भितर एंगल नबा R नेले P Q भितर एंगल नबा सो सेमानक भितर आंसर माने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू फोर्सेस सो ऑप्शन A विल बी करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन Which of the following is a vector quantity? एमानक मध्यरु वेक्टर मु कहितली स्केलर वेक्टर इंजीनियरिंग फिजिक्स रो मध्य मु क्वेश्चन अपलोड करछि जो माने देखि नांती जाई देखि देबे सो वेक्टर हला दोस फिजिकल क्वांटिटी व्हिच ऑफ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शंस ताको या वेक्टर स्केलर कहबा ओनली मैग्नीट्यूड अछि तो एमानक भितर ऑप्शंस देखंतु डेंसिटी मास वॉल्यूम एक्सेलरेशन से चारटा भितरु एक्सेलरेशन रो मैग्नीट्यूड अछि ता सहित डायरेक्शन अछि so option D will be correct next question what is the effect of force upon a body according to the principle of transmissibility of forces very important principle of transmissibility of forces कौन कहूची options देखंतु different at various location along its line of action minimum when the acting at the body's center of gravity maximum when the acting at this body's center of gravity now the same at all point among its line of action so principle of transmissibility of forces कहूची the effect of force will be same at all point along its line of action so same rahibo so option D will be correct next question the moment of resultant of two concurrent forces to a center in their plane is equal to options dekhantu the algebraic sum of moments of the component to the same center the algebraic sum of moment of component to the different center the difference in component moment with respect to different center the difference between the component moment at the same center so sorry the algebraic sum of moment of the component to the same center will be correct that is option A so this is called moment of resultant of two concurrent forces so the exam re asibo apan lekhibe it is the algebraic sum of moment of the component to the same center option A will be correct next question which of the following conditions does not affect the magnitude of the moment एमानक मध्य को कंडीशन टा मोमेंट रो मैग्नीट्यूड को अफेक्ट करियोनी ऑप्शंस देखंतु if the point of application of force is opposing the line of action first option if the point of application of force is along the line of action second option if the moment of center is shifted along a line perpendicular to the line of actions if the resultant is maximal so it is जदि देखिबे आपण चारटी ऑप्शन सो केतेबेले को कंडीशन रे मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट अफेक्ट पड़ेनी so option B देखंतु if the point of application of force is along the line of action जदि हबो ताले it does not affect the magnitude of the moment so option B will be correct next question which of the following forces do not cause the rotation एमानक मध्यरु को फोर्स टा रोटेशन न हबारे हेल्प करेनी रोटेशन रो कॉज नुहे options are non parallel non concurrent parallel concurrent so options D concurrent forces do not cause the rotations so option D will be correct next question
The moment is the cross product of the which of the following two vectors or scalars. So moment टा केउ दुईटी स्केलर बा वेक्टर प्रोडक्ट फोर्स एंड रेडियस स्केलर्स रेडियस एंड फोर्स स्केलर्स फोर्स एंड रेडियस स्केलर्स ना रेडियस एंड फोर्स वेक्टर्स. सो देखो रेडियस और फोर्स रो क्रॉस प्रोडक्ट टा आपण पाइबे मोमेंट. सो मो वेरी इंपोर्टेंट मोमेंट रो फॉर्मूला जदि कहबे रेडियस को आपण फोर्स गुणी देले मोमेंट टा पाइबे किंतु से तार क्रॉस प्रोडक्ट हम कार रेडियस और फोर्स वेक्टर द्वारा कारण फोर्स टा वेक्टर क्वांटिटी because it has magnitude and direction. So option D will be correct. So now come to the next question. Which element of the cross section is made to apply the method of section in the free body diagram? Options are the whole structure, any section can be used, joint, cross. So which element? So the element is any section can be used as a cross section which is made to apply the method of section in free body diagram. So option B will be correct. Next question, which of the following contains moving parts? एमान मधुरु moving parts कोटा? Beam, frames, machines, truss. Obviously machine has contains moving parts. So machines contain moving parts. So option C will be correct. The change in the moment is equal to the which of the following? Change in moment कहले कौन बुझुचंती? Rotational moment, bending moment, total weight, area under the shear diagram. So जदि आपण change in moment अछि question रे ताले यार अर्थ area under the shear diagram. So option D will be correct. Next question. Over a block of weight W, the theory of friction is described. Which of the following describes the surface on which of the following block is located? So color red, having density in negative, the motions of the block is always horizontal, non-rigid. So the correct answer for this question is option D. Next question. Which of the following types of screws used in machine? Very important. क्यों प्रकार screws machine रे use हुए? Options देखंतु round threaded, helical threaded, rectangular threaded, square threaded. So in machines, square threaded screw are used in machines. So option D will be correct. Next question. In the free body diagram, the normal forces acting on the belts are in which of the following directions for calculating the equilibrium equations? So options are horizontally left, horizontally right, vertical upward, vertically downward. So among the four options, option C, which is vertically upward, will be correct. Next question. In the journal bearing calculations, the moment is the cross product of which of the two vectors? देखंतु journal bearing calculation रे moment केन पाइबा कहार क्रॉस प्रोडक्ट को दीटा वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट रे हम मोमेंट ता पाइबा हम जानि छे मोमेंट हला फोर्स इनटू रेडियस किंतु एति जर्नल बियरिंग रे पचारिछि. सो ऑप्शन कोन अछि फास्ट देखंतु फोर्स एंड रेडियस ऑफ स्केलर स्केलर तो हबनी डेफिनेटली कारण वेक्टर्स देछि क्वेश्चन रे टू वेक्टर्स ऑब्वियसली रेडियस एंड फोर्स हम जानि छे रेडियस एंड फोर्स वेक्टर विल बी द करेक्ट. सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट. देखो ये रेडियस टा गोटे वेक्टर नुहे आपण भल जानते रेडियस टा गोटे स्केलर क्वांटिटी किंतु फोर्स टा गोटे वेक्टर से ए सी आउ डी भितर आपण कंफ्यूज होबार नाही. नेक्स्ट क्वेश्चन. Dash are the phenomena that resist the movement of the two forces in contact. Options are friction, motion, circular movement, rotation. Option A, which is friction, are the phenomena that resist the movement of the two surfaces in contact. Next question. The frictional force always acts dash to the surface of the application of friction. Tangential, perpendicular, parallel, normal. So मन रखंतु frictional force टा सबले tangential to the surface of the application of friction. So option A will be correct. Dry friction is also known as Coulomb friction, Coulomb friction, dry Coulomb friction ना surface friction. So मन रखंतु dry friction रो अन्य ना हला Coulomb friction. Next question. At what conditions the dry frictions occurs between the surface in the contact? Options are when there is no lubricating fluid,
when there is no friction fluid, when there is no adhesive fluid, when there is no cohesive force. So at what condition dry friction occurs between the surface of contact? So answer will be A, which is when there is no lubricating fluid. ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟା surface ଭିତରେ lubricating fluid ନଥିବ ସେତେବେଳେ dry friction act ହେବ. So answer A will be correct. The phenomena of horizontal pull or push explain what? Theory of friction, theory of relativity, theory of action, theory of forces. So the phenomena of horizontal pull or push মনে রাখিবে horizontal pull or push कौन explain करे? Theory of friction. So option A will be correct. Next question. Theory of friction is explained over a block of weight W. Which of the following is property of the surface on which block is present? ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି non rigid. Next question. The free body diagram used to explain the theory of dry friction is having dash distribution of both the normal force and the frictional force. Options are uneven, even, uniform, equal. So answer will be uneven. Next question. For equilibrium, the normal forces act in which direction in the free body diagram? Options are vertically upward, vertically downward, horizontal, horizontal left. So answer will be vertically upward will be the correct answer. Next question. What is not the condition for the equilibrium in free body diagram for calculation of normal forces? Options are summation of fx is 0, summation of fy equal to 0, summation of fz is 0, summation of force is not equal to 0. Here for calculating what? Free body diagram, the condition will be summation of force is not equal to 0. So answer D will be correct. Next question. In general cases, the screws are used as fastener, main components, simpler, trimmers. So we know screws are used as a fasteners. Option A will be correct. Which type of screws are used in machines? So a repeated question hella. Square threaded will be the right answer. Why are the square threaded screw are used in machine? So question एटा is important. काहेकि square threaded screw machine रे use करा जाए. So options देखंतु. Options are large forces act along the axis of screws. Small forces act along the axis of force screws. Large forces act perpendicular the axis of screws. Small forces act perpendicular the axis of screws. Here, screw threaded are used in machine because of large force act along the axis of screws. So option A will be correct. Next question. The angle of threading in the screw is determined by which of the following trigonometric functions? Tangent, inverse, sine, cosine, secant. So here angle of threading in the screw will be determined by tangent inverse. Very important. Option A will be correct. In the determination of angle of screw, the ratio kept in the inverse tangent function is the ratio of vertical and horizontal distance of the screw, horizontal and vertical distance of the screw, vertical and linear distance of screw, linear and horizontal distance of screw. So correct option for this question is A, which is vertical and horizontal distance of the screw. Next question. When we apply the equilibrium equation in the free body diagram of the screw, two forces member to be equilibrium, then they both must not be collinear. They must be different magnitude. They must be in same directions. They must be in opposite directions, cancelling each other. So option will be correct. Option will be option D. They must be in opposite direction, cancelling each other. Next question. Which of the following is correct for a screw being rotated? Options are the couple moment depends on the axis of rotations. The couple moment depends directly on the direction of vector forces. The couple moment depends only on the distance vector between the forces. The couple moment is direction is given by the left hand rule. So here the correct answer is option C, which is the couple moment depends only on the distance vector between the forces. Now the last question of this session, which will be if the forces acting on the couple acting on the screw are in the same direction, that is they are not in opposite direction as always, they are in, then options are the direction of the forces does not determine the moment. The couple moment will be maximum. The couple is not possible. No changes occur. Here the correct answer for this question is option C, which is
The couple is not possible. So here I have discussed top 50 MCQ on engineering mechanics. I hope this session will be interesting to you, and definitely these kind of questions will be definitely come in your OSSC ATO exams. So be ready and prepare accordingly. So video जदि भल लगी आपण माने सब्सक्राइब करिवे, लाइक करिवे और शेयर करिवे. So परवर्ती हमरो टार्गेट रहिबो हाउ टू क्लियर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस. सो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन क्लियर हेले मेन एग्जामिनेशन देबे. सो ता पई हमें सिलेबस वाइज मध्ये हमें डिस्कशन करिबा. सो ई वीडियो रे एतिक रे हमें समाप्त करिबा. नेक्स्ट वीडियो पई मो चैनल सहित जोड़ी रहंतु. मो चैनल नेम हैला एजुकेशन पॉइंट बाय बबुल सामल. सो मु टेक्निकल रिलेटेड जेमति कि असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर रो एबे क्वेश्चन माने सिलेबस वाइज हमें डिस्कशन करछे. आगो को मध्ये टेक्निकल रिलेटेड जे कोनोसी क्वेश्चन आसीबो मध्ये हमें डिस्कशन करिबा. सो एतिक रे रखिबा. धन्यवाद.